सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सागर एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ सुपर ब्रोस। तो गाइस आज मैं रिएक्शन देने आ रहा हूँ आरएम की एक मोस्ट पावरफुल स्पीच पे। जी हाँ गाइस, इस बार स्पीच कहूंगा क्योंकि अधिकतर इनके पावरफुल सॉन्ग्स ही होते हैं। इस बार हम सॉन्ग से भी ज्यादा पावरफुल स्पीच पे इनकी रिएक्शन देने जा रहे हैं क्योंकि गाइस इनकी जो स्पीच है वो इतनी ज्यादा पावरफुल और कमाल की, इसका आप अंदाजा इसी से लगा सकते हो कि कितने बीटीएस आर्मी में लोग इसी स्पीच को देख करके आए थे कि इन्होंने अपनी स्पीच में ऐसी ऐसी बातें बोली थी, ऐसी ऐसी चीजें कही थी जो कि सीधा हार्ट टच थी। तो गाइस लोग उसी से इतने ज्यादा दीवाने हो गए थे। तो गाइस आज इस वीडियो को बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि गाइस जो उनकी बहुत कमाल की जो स्पीच थी वो अब हमारे इंडियन कल्चर में आने वाली है। मतलब कि गाइस हमारे जो इंडियन बुक्स हैं उसमें हमें वो ऐड हो गई हैं। और गाइस अभी तो फिलहाल वो तमिलनाडु में की जो बुक्स हैं वहां पे ऐड हुई हैं। और गाइस ये हर जगह बातें फैल रही थी। तो गाइस मैंने भी इसके ऊपर कुछ रिसर्च की है। तो गाइस एक तमिलनाडु के ही मेरे एक सब्सक्राइबर थे, उन्होंने मेरे को बताया था उनके यहाँ पे भी ये स्पीच ऐड कर दी गई है। तो मतलब कि अब आपको ऑफिशियली बुक्स में देखने के लिए मिलेगी बीटीएस की स्पीच। और गाइस ये बीए में आपको देखने के लिए मिलेगी। मतलब कि आप तमिलनाडु में रहते हो और अगर आप बीए कर रहे हो तो वो आपको स्पीच पढ़ने के लिए मिलेगी। वेल गाइस आजकल की जनरेशन के बारे में बताऊं तो आजकल की जनरेशन में तो सभी को लगभग पता ही है कि बीटीएस कितने कमाल के म्यूजिक बनाते हैं और वो अपनी आर्मी ही नहीं मतलब पूरी दुनिया के लिए कितने बढ़िया रोल मॉडल है। लेकिन गाइस इससे फायदा हमारे टीचर्स को होगा जिनको पता पड़ेगा कि हाँ बीटीएस भी कोई एक ग्रुप है जो कि कितना अच्छे ग्रुप बनाते हैं, कितनी अच्छी अच्छी चीजें बताते हैं। तो गाइस अब हमें ऑफिशियली पढ़ने के लिए मिलेगा, ये सच में बहुत बड़ी बात है। और सबसे ज्यादा खास है वो स्पीच क्योंकि गाइस वो स्पीच एक अलग ही टाइप की स्पीच थी। मतलब कि मैं आपको बता भी नहीं सकता, इसलिए मैंने सोचा कि आज उस स्पीच पे रिएक्शन ही देते हैं। वेल गाइस मैंने वो स्पीच नहीं सुनी, बस इस स्पीच के बारे में लोगों को सुनते हुए सुना है कि हाँ वो लोग कहते हैं कि बहुत बढ़िया। तो गाइस इससे बढ़िया और मौका नहीं मिलेगा उनकी वो स्पीच को दोबारा से सुनने में। तो गाइस पहले उनकी ये स्पीच सुनते हैं, बाकी सारा डिस्कशन रिव्यू बाद में करते हैं। Thank you, Mr. Secretary General, UNICEF Executive Director, and all the excellencies and distinguished guests from across the world. My name is Kim Namjoon, also known as RM, the leader of the group BTS. Yo. It is an incredible honor to be invited to an occasion with such significance for today's young generation. Last November, BTS launched the Love Myself campaign with UNICEF, building on our belief that true love first begins with loving myself. We've been partnering with UNICEF's End Violence program to protect children and young people all over the world from violence. And our fans have become a major part of this campaign with their action and with their enthusiasm. We truly have the best fans in the world. And I'd like to begin by talking about myself. I was born in Ilsan, a city near Seoul, South Korea. It is a really beautiful place with a lake, hills, and even an annual flower festival. I spent a very happy childhood there, and I was just an ordinary boy. I used to look up at the night sky and wonder, and I used to dream the dreams of a boy. I used to imagine that I was a superhero who could save the world. And in an intro to one of our early albums, there's a line that says, "My heart stopped when I was maybe 9 or 10. Looking back, I think that's when I began to worry about what other people thought of me and starting seeing myself through their eyes. I stopped looking up at the night skies, the stars. I stopped daydreaming. Instead, I just tried to jam myself into the malls that other people made. Wow. Soon, I began to shut out my own voice and started to listen to the voices of others. No one called out my name, and neither did I. My heart stopped and my eyes closed shut. So, like this, we all lost our names. We became like ghosts. But I had one sanctuary, and that was music. There was a small voice inside of me that said, "Wake up, man, and listen to yourself." But it took me quite a long time to hear music calling my real name. Even after making the decision to join BTS, there were a lot of hurdles. Some people might not believe, but most people thought we were hopeless. And sometimes I just wanted to quit.
But I think I was very lucky that I didn't give it all up. And I'm sure that I and we will keep stumbling and falling like this. Wow. BTS has become artists performing in those huge stadiums and selling millions of albums right now, but I am still an ordinary 24-year-old guy. If there's anything that I've achieved, it was only possible that I have my other BTS members right by my side, and because of the love and the support that our ARMY fans all over the world made for us. And maybe I made a mistake yesterday, but yesterday's me is still me. Today, I am who I am with all of my faults and my mistakes. Yeah. Tomorrow, ये की ना बात. I might be a tiny bit wiser, and that'd be me too. These faults and mistakes are what I am, making up the brightest stars in the constellation of my life. Wow. I have come to love myself for who I am, for who I was, and for who I hope to become. I like to say the one last thing. After releasing our Love Yourself albums and launching the Love Myself campaign, we started to hear remarkable stories from our fans all over the world, how our message helped them overcome their hardships in life and start loving themselves. Those stories constantly remind us of our responsibility. So, let's take all one more step. We have learned to love ourselves. So now I urge you to speak yourself. ये चीज कोई नहीं सिखाता. I like to ask all of you, what is your name? What excites you and makes your heart beat? Tell me your story. I want to hear your voice. I want to hear your conviction. No matter who you are, where you're from, your skin color, your gender identity, just speak yourself. Wow. Find your name and find your voice by speaking yourself. क्या बात बोली है. I'm Kim Namjoon and also RM of BTS. I am an idol and I'm an artist from a small town in Korea. Like most people, I've made many and plenty mistakes in my life. I have many faults and I have many more fears, but I'm gonna embrace myself as hard as I can. And I'm starting to love myself gradually, just little by little. What is your name? Speak yourself. Thank you very much. सैल्यूट है इन लोगों को सच में. सो गाइस देखा आप सभी ने, मतलब कि गाइस मैंने इससे पहले ये नहीं सुनी थी, लेकिन हाँ मैं सिर्फ इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि सब लोग इसे बेस्ट बोलते हैं. मैं इसीलिए बेस्ट बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे बेस्ट लगा. मतलब कि इस स्पीच को मेरे को ऐसा लगा था शायद ही अपने बारे में बताएंगे, अपने स्ट्रगल के बारे में बताएंगे, लेकिन इन्होंने ना के बराबर भी अपने बारे में कुछ नहीं बताया. इन्होंने हमें हमारे ही बारे में बताया कि स्पीक योर सेल्फ, लव योर सेल्फ, और ये इनका कैंपेन भी था. मतलब कि कितनी कमाल की बात है. मैंने आज तक ऐसी कोई स्पीच नहीं सुनी जिसमें कि हमें बोला जाता है कि आपने आप से प्यार करो. तब कमाल की बात है. मतलब कि सब में एक पॉजिटिविटी डालना चाहते हैं ये, जो कि सच में बहुत बढ़िया बात है. आजकल कोई ऐसा करता ही कहाँ है. मतलब कि बीटीएस की ये स्पीच तो गाइस सच में बहुत अच्छी थी. मतलब कि वो बोलते हैं अपने आप को अपना नाम बोलो, और उन्होंने कितनी कमाल कमाल की बातें बोली थी. सही हुआ ये इंडियन बुक्स में ऐड हो गई. अब ये तमिलनाडु में हुई है, धीरे धीरे करके ये हर जगह पर ऐड होनी ही चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है. और गाइस म्यूजिक इंडस्ट्री से रिलेटेड मेरे को नहीं लगता कि कोई आउट ऑफ इंडिया का कोई ऐसा म्यूजिक बैंड होगा या कोई ऐसा म्यूजिक होगा जिसे कि इंडियन बुक्स में ऐड किया गया है. लगता है ये पहला ही है, और अगर कोई होगा तो आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो. जो कि गाइस मतलब कि कितनी कमाल की बात है. वेल उनका कोरियन होना और उनका इंडियन की बुक में ऐड होना और इंडियन लोगों का उनके बारे में इतना पॉजिटिव विचार रखना, ये बहुत बड़ी बात है.
सच में ये यूनाइटेड नेशन में बोली गई थी। मैं तो कहता हूँ इसे हर जगह पर सुनना चाहिए। हमारे भी स्टेट में जहाँ मैं रहता हूँ वहां पे भी इसको बुक्स में ऐड कर देना चाहिए। ये इतनी बढ़िया बात है और सच में गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा कदम उठाया है। तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा कदम उठाया है। ये स्पीच गाइस किसी एक इंसान के ऊपर नहीं है, मतलब कि ये पूरी दुनिया में कोई भी इसे देख सकता है, कोई भी पढ़ सकता है और कोई भी इसको सुन सकता है। कितनी बेस्ट बात है, मतलब कि वो कोरियन होकर के पूरी दुनिया को इतना सुंदर म्यूजिक तो देते ही हैं और इतना ब्यूटीफुल मैसेज भी देते हैं, जो कि सच में बहुत बड़ी बात है। और गाइस अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन हो तो मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में या इंस्टाग्राम पे आकर के मेरे मैसेज करके मेरे को बता सकते हो। तो गाइस आज की वीडियो बस इतना ही। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं किसी और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक पे।